अस्सलाम वालेकुम बांग्लादेश। तो कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कर रहे होंगे और बच्चे बूढ़े लाजमी देख रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो कुछ इस तरह से है कि जब शेख मुजीबुर रहमान जेल से रिहा हुए, पाकिस्तानी जेल से, तो वो पहले दिल्ली गए और उसके बाद उन्होंने ढाका अपने इंडिपेंडेंट कंट्री में अपना कदम रखा। तो उस टाइम के कुछ हाइलाइट्स हैं, ब्लैक एंड वाइट्स हैं, बट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। देखते हैं कि उनका कैसे वेलकम किया गया था बांग्लादेश के अंदर। तो जल्दी से चलते हैं हम वीडियो की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं उसको कि वो कैसी वीडियो है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल काउंटडाउन से। 3, 2, 1, लेट्स गो। ओरिजिनल क्रिएटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। January 10, 1972. An important phase of the Bangladesh story came to an end today. The American Naval Task Force in the Bay of Bengal, which caused such a ruckus in India and here at home, steamed out of the bay today and is now in the South China Sea. And Sheikh Mujibur Rahman, who may become known as the George Washington of Bangladesh, returned to Dhaka in one of the most emotional outbursts in that emotional part of the world. Here are two reports on his journey and on his return. India welcomed Sheikh Mujibur Rahman with full state honors. Sheikh Mujib was greeted first by India's President Giri, Prime Minister Indira Gandhi. थोड़ी सी वीडियो जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट है, थोड़ा समझ नहीं आएगी क्योंकि बहुत ओल्ड है, इसी वजह से। Only 2 countries that have officially recognized Sheikh Mujib's government. I go back now to free, independent, sovereign Bangladesh. I go back not with any hatred in my heart for anyone, but with the satisfaction that truth at last triumphed over falsehood, sanity over insanity, courage over cowardice, justice over injustice, good over evil. Joy, Bangla, joy, Hind. Having met the dignitaries at the airport, Sheikh Mujib moved to a nearby parade ground for a public meeting. Many Indians had waited for Sheikh Mujib's release from Pakistan as if he were their president. Thousands of them welcomed him. The Indians are proud of their victory in Bangladesh. It has changed the way the world looks at them and the way they view themselves. In honoring Sheikh Mujib, the Indians were also celebrating their role in helping secure his freedom. The Indian government had planned an extensive schedule, but Sheikh Mujib cut it short. He left after only 2.5 hours. He said he was in a hurry to get home. Jack Paxton, NBC News, New Delhi. This moment was the culmination of a 22-year struggle by Sheikh Mujibur Rahman for a separate Bengali nation. He has been thrown in jail at least a half dozen times for his activities. Now he was home in Dhaka, the leader of an independent Bangladesh. His people shouted their adoration. On the airplane ramp, engulfed in well-wishers and flowers, he covered his eyes for a moment, overcome by the emotion of the occasion. Security at the airport was tight, with only a few hundred leading citizens allowed on the tarmac, and hundreds of thousands of other Bengalis who wanted to see him kept outside in the street. But as soon as the Sheikh appeared, the security broke down and he was swamped. He managed to review an honor guard of Bangladesh soldiers, sailors, and airmen, and he moved partway down a red-carpeted reception line, but then the crush became too great and he cut short the ceremonies. Sheikh Mujib climbed into an open truck for his motorcade through the streets. Dozens of young men, some of them guerrilla fighters in the war, tried to climb in with him. As many as 1 million people jammed the streets to cheer their leader, shouting "Long live Bangladesh" and "Long live Sheikh Mujib." At times, the truck could not move at all. The street was so jammed. Many people were trampled. Obviously, Sheikh Mujibur was first in the hearts of his countrymen as he began his presidency. However, when the celebrations end and he starts to run the government, he will face economic, political, and diplomatic problems so enormous they will test even his great popularity. He may find, as other revolutionary heroes have discovered,
that it was easier to create a new nation than it is to make it work. Ron Nesson, NBC News, Dhaka. जी तो फ्रेंड्स, वीडियो होती है यहाँ पर ख़त्म। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। उसकी रीज़न ये देखा आपने कितने अच्छे से बांग्लादेशी लोगों ने वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान का वेलकम किया जब वो पाकिस्तान से फ्री होकर पहले दिल्ली गए थे आई थिंक। तो दिल्ली से फिर उनकी फ़्लाइट थी जो कि बांग्लादेश की थी, ढाका की। तो वहाँ पे बहुत से लोग थे जिन्होंने उनका वेलकम किया। वो बड़े पुरजोश तरीके से काफ़ी मतलब लोग इकट्ठे हुए थे और वहाँ पे उन्होंने स्पीच भी की थी। तो काफ़ी अच्छी वीडियो थी, थोड़ी सी पुरानी थी तो कुछ दिखाई साफ नहीं दे रहा था, बट क्योंकि बहुत पुरानी वीडियो उस टाइम तो आई थिंक कैमरे भी कोई इतने मज़े के नहीं होते थे। तो फिर भी कोशिश की कि कुछ इस तरह का मटेरियल मैं ढूंढ के आपके लिए लेकर आऊँ। तो बड़ी मुश्किल से ये वीडियो मिली। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और बांग्लादेश की बहुत बड़ी एफर्ट है, इस पे बहुत से लोगों की कुर्बानियाँ दी गई थी इस चीज़ विक्ट्री को हासिल करने में, क्योंकि 1971 की वॉर में बहुत से लोग जो कि मुस्लिम भाई थे हमारे, वो हमारी ही गलती की वजह से मारे गए। तो बहुत ही सैड भी है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका है अब बांग्लादेश और उनके लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं हमेशा से और रहेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।